Look at this question. Find the least number which must be added to this given number so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. So here one number is given as 306452. Of course this number is not a perfect square. But when you add some least number in with this number, then the result become a perfect square. And then you have to find out the square root of that number, so obtain. So when we are talking about the addition or subtraction, some addition or subtraction of some numbers from the given number to make the result as a perfect square, that means we always use the long division method. So here we are going to use the long division method. So first of all we make the pair, first pair, second pair and the third pair. Now write down 5 5 and write 1 5 here, 25. So we get after subtraction 5 only. Now write down next pair 64 and add these two numbers 10. Again what we write? Let us try with 5. Write 1 5 again. Now multiply. So what we get? 5 25. Now subtract. So what we get? 9 3 39 here. Now write down the next pair 52 and add number 110. Now we try with 3 and write 1 3 here. Now multiply 9 0 33. So after subtraction what we get? Subtract numbers. So we get 3 4 6 means 643. So here you can look that now we have no pair to write down here. Now analyze this process. This is a case of addition. You have to add some number here, not to subtract. You have to add some number here. So we don't want to make the process so lengthy and we don't want to write down so much steps. That means look at the last step of the long division method. When we use 3 3 here, then we have the remainder. Means we have the positive remainder here. But since it is the case of addition, so and we get the positive remainder as 643. So for making the steps less, what we do? We don't write 3 3 here. So just erase this. And here we erase this. And we try with 4 and write down 4 here. Now we erase these numbers. So after multiplication what we write? 16 and 44. That means this number 4416 is greater than this one. That means when we subtract we get the negative remainder. तो अब हमें यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा. दैट मीन्स इस बड़े नंबर में इस छोटे नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 4 6 4 माइनस मीन्स इस लार्जर नंबर में स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर निगेटिव आता है. सो 464 is the required number to be added. So the required least number to be added
is equal to 464. माइनस साइन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, माइनस साइन यहाँ सिर्फ यह बताता है कि 464 को हमें ऐड करना है. सो द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर टू बी एडेड 464. सो द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू, इस नंबर को हमें दिए गए नंबर में ऐड करना है. 306,452 plus 464. Just add them. We get 619,603. So this number is the square number. Now we have to find out the square root of perfect square number. Means this perfect square number का हमें square root निकालना है. Now the square root of this number. Now square root of 306916. No need to find out again the square root. Just look at the quotient. 554. So the 554 is the square root of this square number. So this is the answer. Find the least number of 4 digits which is a perfect square. So everyone know about the least number of 4 digits. That means the smallest number of 4 digits. First we write it. The least number of 4 digits is equal to 1000. You can find that this 1000 is not a perfect square. That means you have to add something here or subtract something here. Just think about it. हमें यहाँ add करना होगा या subtract करना होगा. अगर हम इसमें कुछ subtract करते हैं तो subtract करने पर अगर कम से कम हम यहाँ 1 भी subtract करते हैं तब यार ये पैटर्न चेंज हो जाएगा और यहाँ पर 1 subtract करने पर यह ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा. हमें तो लीस्ट नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं चाहिए. हमें लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स चाहिए. दैट मीन्स इसमें हम सब्ट्रैक्शन का मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे. तो दैट मीन्स यहाँ अगेन हम यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं. सो 1000 first of all make the pair. So we have 2 pair here. So for the first pair 3 3. So write 1 3 here as a quotient. Now 3 3 is 9. Subtract 1. Now write down next pair 0 0. Now add these 2 numbers 6. So write down another digit 1 1 and write 1 here. So after multiplication we get 61. That means when we subtract we have 39. So here we get the positive remainder and we know that we want to add something, not to subtract. We want to add something. तो add करने के लिए हमें पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं चाहिए. पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ अगर हम स्टेप्स करते हैं तो बहुत लेंथी जाएगा. इस कारण हम निगेटिव रिमाइंडर यहाँ लाने की कोशिश करेंगे. तो फिर से वही स्टेप्स करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि अब हम यहाँ 1 1 को इरेज कर रहे हैं जितनी जगह हमने चेंजेस किया था. 1 की जगह पर यहाँ अब हम लोग 1 से जस्ट बड़ा नंबर 2 लेते हैं. तो 2 2. Write 2 here. Now write down after multiplication 4 1 2 4, which is this number is greater than 100. That means after subtraction we get negative remainder. When we subtract 100 from 124, this is larger and this is smaller.
तो लार्जर में स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करने पे वी हैव द नेगेटिव रिमाइंडर. दैट मीन्स -24 रिमाइंडर के रूप में यहां पर आया. तो लीस्ट नंबर टू बी एडेड, कौन सा नंबर हमें ऐड करना है? 24 हमें ऐड करना है इस नंबर में, ताकि हम उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाए. सो लीस्ट नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 24. माइनस साइन नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर ही लिखेंगे 24. सो परफेक्ट स्क्वायर हमें क्या प्राप्त करना है? फाइंड आउट करना है परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 1000 में 24 ऐड करेंगे. सो वी हैव 1024. अब चूंकि यह स्क्वायर रूट निकालने नहीं बोला है, फिर भी स्टेप्स को देखते हैं. हमने हमारा आंसर हमारा तैयार हो गया यहाँ पर. अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू, no need to find out again the square root, just write down the quotient as the answer. So square root 32 आया, and this is the perfect square number, and it is the least number of 4 digit which is a perfect square.